Hello bachcho, let's read this question. The question says, perform the following calculations and express the result to appropriate number of significant figures. एक यहाँ पर एक मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन टाइप का कैलकुलेशन गिवन है विच इज 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 5.00 डिवाइडेड बाय 4.0 इंटू 10 टू द पावर 20. इसे हमें सॉल्व करना है और हमें बताना है कि इसका रिजल्ट कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसके रिजल्ट में कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे या फिर हमें एक्सप्रेस करना है इसको टू द अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. देखते हैं इस क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है number of significant figures expressed in calculations. Calculations में हम number of significant figures को कैसे express करते हैं, वही है इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. So क्वेश्चन में जो calculation given है that is 6.02 into 10 to the power 23 into 5.00 divided by 4.0 into 10 to the power 20. अब इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर जो डिजिट्स गिवन है हर एक डिजिट का नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है. सबसे पहला डिजिट है 6.02. 6.02 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है. 6 is a significant figure and this 0 after the decimal point which is in between two non-zero digits is also significant. So this has 6.02 has 3 significant figures. Second we have 10 to the power 23. इस exponential form में जो digits रहता है like 10 to the power something, those are not counted as significant figures. 10 to the power something or these exponential form digits are not significant. So we will take this as zero significant figure. Now there is 5.00. 5.00 में जो है आप देख सकते हो कि डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 जीरोस है और ये डेसिमल पॉइंट के बाद वाले जीरोस जो है वो सिग्निफिकेंट होता है. सो वी कैन से दैट 5.00 also has 3 significant figures. इसमें भी 3 significant figures present है. तीसरा नंबर है 4.0. 4.0 में भी सेम रूल अप्लाई होगा, दैट इज डेसिमल पॉइंट के बाद वाला जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट है. सो वी कैन काउंट हियर two significant figures. One is 4 and the other is the 0 after the decimal point. These two are the significant figures present in 4.0. और इसमें भी similarly जो ये 10 to the power 20 है उसमें कोई भी significant figure present नहीं है क्योंकि ये exponential form में है और इनमें कोई significant figure present नहीं होता. So now जब multiplication और division का केस आता है, when it is the case of multiplication or division, इस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को सॉल्व करके हमें जो रिजल्ट मिलता है या फिर जो आंसर मिलता है उस आंसर को हम मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स दैट इज प्रेजेंट इन द डिजिट्स दैट आर गिवन इन द क्वेश्चन में एक्सप्रेस करेंगे. That is, for multiplication or division, the rule of significant figures is to count the number of significant figures in each number that are being multiplied or they are being divided, and then we have to limit the significant figures in the answer to the lowest count. That is, suppose these are the numbers that are being multiplied and divided in the question, so we are going to limit the number of significant figures to the least number of. In the answer or in the product what we have the result after this calculation, in that result we will take the least number of significant figures. We will express the result as the least number of significant figures. Okay, this is the rule in case of expressing the significant figures in case of multiplication or a division problem. So now we will calculate it. So the calculation will be, the question that is given is 6.02 into 10 to the power 23 into 5.0 divided by, it is given 4.0 into 10 to the power 20. 4.0, it's given 4.0 into 10 to the power 20. So इसको अगर हम calculate करेंगे we will find
न्यूमरेटर को 6.02 into 5 will be 30.1 into 10 to the power 23 divided by 4.0 into 10 to the power 20. इसको हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं 30.1 डिवाइडेड बाय 4.0 इंटू 10 टू द पावर 23 माइनस 20. ये डिनोमिनेटर वाला 10 टू द पावर 20 जो है ये इसको अगर हम ऊपर ले आए न्यूमरेटर में ले आए तो दैट विल बी 10 टू द पावर माइनस 20. सो दैट विल गिव अस 10 टू द पावर 23 माइनस 20. 30.1 divided by 4 will give us a value of 7.525 into 10 to the power, this will be 3. So this is the result of the calculation of this particular question. Now, अब हमें इस आंसर को एक्सप्रेस करना है एज द मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर दैट इज प्रेजेंट इन द नंबर्स दैट आर बीइंग मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड. अब यहाँ पर हमने देखा कि मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो 4.0 में प्रेजेंट है विच इज टू सिग्निफिकेंट फिगर्स. इस क्वेश्चन में दिए गए सारे नंबर्स के बीच ये 4.0 जो है उसमें सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट है यानी कि लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट है और उसी लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम इस आंसर को भी एक्सप्रेस कर लेंगे. सो वी विल express this to two significant figures. So we will write expressing the answer to two significant figures. Expressing the answer to two significant figures we will have the answer to be 7.5 into 10 to the power 3. अब ये आंसर कैसे हुआ? ये 7.5 में there are two significant figures और ये जो 10 to the power 3 exponential term है इस exponential figure में there are no significant figures. There is no significant figures in this exponential term. So the correct answer to your question is 7.5 into 10 to the power minus 3 which has two significant figures that is 7 and 5. I hope आपको समझ आ गया हो. Best of luck.